Dear God, please bless us with good health and good cheer. Dear God, bless us with lots of strength that we could sail through this difficult time which has come. Dear God, please bless our country, our countrymen, our friends, our relatives, our grandparents, our parents, and bless our lives that we could smile and we could smile in this odd situation. Amen. So, yes, it is a wow and a wonderful Wednesday for all of us, being the 21st of October 2020. And I deem it an honor and a pleasure. And I am really happy to invite our worthy principal ma'am who has joined us to address all of us. We are indeed thankful to you, worthy principal ma'am, for sparing out your precious time, and you are here with us today, this wonderful Wednesday morning. Thank you so much, ma'am. It's over to you, please. Good morning, my beloved students. Good morning to all the great teachers who have made so much possible for these youngsters. और एक प्रेम भरा नमस्कार और सत श्री अकाल उन सभी पेरेंट्स के लिए जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। बहुत खुशी होती है जब माँ बाप बच्चों के माता पिता स्कूल के साथ खड़े हो जाते हैं। दोनों का मकसद तो एक ही है ना, मकसद है कि ये जो बच्चे हैं कहीं कहीं जब ये थोड़ा गैर जिम्मेदार बिहेवियर करते हैं, नॉन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जब कहीं हो जाता है, तो वहाँ पे पेरेंट्स का भी साथ है और स्कूल का भी साथ है। हम दोनों यही चाहते हैं, द स्कूल एंड द होम, that the children perform very very well in this the last 2 years of the school. You know, there's a saying which goes on that if we work very, very hard in the first 25 years of our life, we'll be having wonderful years in the next 75 years of our life. And in those 25 years of our life, if we work very, very hard for the first 18 years of our life, 20 years of our life, then it's fabulous. In 25 years, we complete our education, and then another phase of our life begins when we start working somewhere. So thank you dear parents for joining us. बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं आ पाए कोई बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे शेयर करेंगे कि आज की क्या बातचीत हुई। My beloved students, back in January, when you were preparing for your board examinations, grade 10, whether it was ICSE board or the CBSE board, or for that reason, any other board, any other state, a Punjab School Education Board, little did you visualize that in grade 11 you would not be going physically to a school. नहीं सोचा था, आपने नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था. You know, this is the most difficult time, they keep saying on. But the sky has not fallen. We are living, we are alive. And we are working. We are working to gain this knowledge as such. So it's all right. A pandemic is the first time I'm experiencing in my life. This pandemic is the first time you as little boys and girls, young boys and girls experience. And this pandemic is the first time when apart from the parents, the grandparents are also experiencing for the first time. First time ऐसे रास्ते पे चलना जो कभी नहीं चले हों, मुश्किल तो होता है, पर मंजिल तो पहुंच जाते हैं ना सभी हम लोग, अगर हम उस रास्ते पे चलते रहें.
देखा हुआ पहचाना हुआ रास्ता आसान होता है, बेफिक्री से चल पड़ते हैं। लेकिन दिस टाइम, इस वक्त, we have to make sure that we travel this path with lots of responsibility, lots of concern, and lots of carefulness, and then we move ahead. बड़े सपने लेके बच्चों ने सोचा होगा कि we'll be going to Kamala Nehru Public School. Oh, we'll be having great fun. We have heard so much about that school. School known for activities, school known for academics, school known for international connections. But then, today, this school is known for remote learning. हिंदुस्तान में सब जानते हैं कमला नेहरू पब्लिक स्कूल को कि कितना अच्छे से उनकी रिमोट लर्निंग क्लासेस चल रही हैं. Internationally, people know because a story has been published on Kamala Nehru Public School by Microsoft as a role model school which is catering to 65 villages where remote learning is going on right from kindergarten to grade 12. I am not here to blow trumpets, but apna school hai, khushi to hoti hai na. You think about the best schools in the neighborhood in Jalandhar, Phagwara, other places. They don't have classes going on to this extent. Education तो एक सीढ़ी की तरह होता है, you know, from one level to the next higher and to the next higher and so on. बीच में कोई सीढ़ी खत्म हो जाती है या एक नेकलेस का कोई मोती निकल जाए तो मुश्किल हो जाता है. So it's so good we are continuing with this academic excellence which is happening. और सारा का सारा श्रेय मैं पेरेंट्स को देती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को मोटिवेट किया है, who have joined us. And all the teachers who have been working 24/7 to prepare these lessons and teach. It didn't happen overnight, my boys and girls. January में, December 19 में जब China में problem आई, we put our heads together and decided if we have to go for remote learning. Planning. We deliberated in the month of January. Our teachers are coming about, you know, half an hour early. Every morning we would plan, how do we go about? How do we take it forward? And then actually lots of training happened, mock sessions happened, and ultimately on 2nd April, we started for grade 12, and then another week's time, and we started for 11th, and all of that. Overnight nahi hua tha. It took January, February, March, and December, half of it. 4 mahine lage the to have what we are having now. Why am I discussing? मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूं कि प्लानिंग जिंदगी में कामयाबी का पहला कदम और आखिरी कदम होता है. अगर आप अच्छी प्लानिंग करेंगे तो आप ग्रेड 11 से you'll move to grade 12. Otherwise, it would be very, very difficult, children. Don't, please, I am not here to create a sort of fear or something like that. But असलियत से वाकफ कराना मेरी जिम्मेवारी है. अगर आप पढ़ेंगे नहीं और क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे और ये एज्यूम कर लेंगे कि ये स्कूल एग्जामिनेशन है और ये भी एज्यूम कर लेंगे कि पैंडेमिक चल रहा है तो हर बच्चा 11वीं का 12वीं में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चों. हम चाहते हैं कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, whatever you have been studying, the way you have been studying, you continue, please. You are our children. Every human being needs reminder. मैं सिर्फ याद दिलाने आई हूँ. I've just come here to tell you, my boys and girls, you need to work very hard. मैं सिर्फ पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करने आई हूँ कि आप बच्चों का घर में ध्यान रखिए. हम स्कूल में रिमोट लर्निंग में ध्यान रख रहे हैं. बच्चे गलती करेंगे, भूल जाएंगे, नहीं आएंगे रिमोट लर्निंग में, लेकिन हम सब ने मिलकर उनको लेके आना है. लेकिन अफसोस तो यही है कि मेरे बच्चे बड़े कब होंगे. ये 17 साल के हो गए हैं, कोई 16 साल का है, किसी को शायद 18वां साल भी चढ़ गया हो. ये कब बड़े होंगे, कब ये अपनी पढ़ाई की जिम्मेवारी खुद लेंगे. There's something which is known as self-regulation. ये बाकी स्कूल तो से 7 months तक लगा है. आप थोड़ा लेट अगर ज्वाइन करें हैं, कुछ ने मार्च में ज्वाइन किया था, अप्रैल में बिगनिंग में. You spent good 6 months in the school, and 6 months you have honed your IT skills. IT skills आपकी definitely बढ़ोतरी हुई है उसमें. You have learned how to, the communication skills, listening to your teachers, how beautifully they communicate. You have learned to collaborate. You have learned all these.
So why can't we? These are the 21st century skills. आने वाले समय में जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है वो सेल्फ रेगुलेशन भी है. कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, कोलैबोरेटिव स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, बट सेल्फ रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी कामयाबी के लिए खुद जिम्मेवार होना. माँ बाप ना कहें कि पढ़ लो, टीचर्स ना कहें कि पढ़ लो, और बच्चे इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाएं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सक्सेस. अपनी जीत के लिए भी जिम्मेवार हूं, अपनी हार के लिए भी जिम्मेवार हूं. उसने ऐसा नहीं करा इसलिए मेरे मार्क्स कम आए इज नॉट द वे द फ्यूचर इज गोइंग टू बी. आने वाला समय डिफरेंट है. आप अपनी चाल के लिए जिम्मेवार होंगे, आप अपनी नॉलेज के लिए जिम्मेवार होंगे, और आप अपनी स्किल्स के लिए भी जिम्मेवार होंगे. So why should the teachers keep on calling you? What I am made to understand it is कि बहुत सारे फोन करते हैं, पढ़ते हैं, तब बच्चे उठते हैं. कितनी it's so discouraging for the teachers. हमारे लिए कितना डिस्करेजमेंट है. और कहीं हम बहुत डिस्करेज हो जाएं हम सब टीचर्स, और हम कह दें कि नहीं आते तो ना आए. हमारे पास रूल्स हैं. 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो फाइनल इम्तिहान में नहीं बैठ पाएंगे. सीबीएसई ने रूल बनाया है, अटेंडेंस तो रोज लग रही है. आप नहीं आएंगे तो आखिर में परेशान होंगे, माँ बाप भी परेशान होंगे. लेकिन हम अपने रूल्स के पक्के हो जाएंगे और आप 11वीं का इम्तिहान ही नहीं देख पाएंगे तो 12वीं में जाने का सवाल ही नहीं उठता. तो रोज अटेंड करना जरूरी है. वो आपकी जिम्मेवारी है. टीचर्स फोन करके जब बुलाते हैं तो मेरा दिल दुखता है कि इतने बड़े बच्चे हो गए, क्यों नहीं ये समझते. मे बी विल ट्राई इट फॉर अ वीक. एक हफ्ता हम एक भी कॉल नहीं करेंगे, और फिर अगर कोई नहीं आता तो वो अपने लिए जिम्मेवार है. वील बी सेंडिंग सम मेल्स. क्या करें, मजबूरी में ये सब कहना पड़ रहा है, क्योंकि स्कूल भी जब जाते थे तो 8 बजे तो पहुंचते थे ना, तो अब क्यों नहीं हम अपनी रिमोट लर्निंग के लिए पहुंच जाते. एक और बात हुई थी सब टीचर्स के साथ, उसमें उन्होंने बताया that I'm getting into this vernacular language off and on is मैं जानती हूँ कि मेरे साथ मेरे मेहमान भी हैं, मेरे पेरेंट्स हैं बच्चों के. सो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पहली क्लास अटेंड कर लेता है, दूसरी में नहीं आता, तीसरी में आ जाता है. आज आप ध्यान से सुन लीजिए, माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज लेंड मी योर ईयर्स. If you are present for the three sessions, you will be marked present for the day. If you're not present for the 3 sessions, sorry, we are not going to consider you present. All right? And then again, we have to make sure that come what may, we are punctual also. हम लोग जो ये ऑफिस टाइम रखा है लेसन पढ़ाने के बाद, if you have not followed anything, उस आधे घंटे में अपने डाउट्स पूछिए. चुपचाप बैठ के चले जाना तो पढ़ाई नहीं होती है. एजुकेशन इज ऑलवेज इंटरैक्टिव. Please ask your teachers as many questions as you can. It is very, very important. Well-being calls भी इसीलिए रखी हैं. आप देखिए एक टीचर जो स्कूल के 6 घंटे के अलावा 3 घंटे 2.5 घंटे अपने प्रेजेंटेशन बनाने में लगता है, अपने परिवार को छोड़कर वो इस स्कूल की जिम्मेवारी को निभा रहा है, स्कूल के परिवार का ध्यान रख रहा है, और उसको सुबह उठते सारी जब फोन करने पड़ते हैं तो कितनी गलत बात है. मे बी फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, उपासना मैडम, वी मे नॉट कॉल द चिल्ड्रन एट ऑल. ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आते तो नहीं आए. इट इज ऑल राइट. मे बी वन डे दे विल रियलाइज इट. वी कैन एक्सपेरिमेंट इट फॉर अ वीक. इस हफ्ते हम सब बच्चों को बताएंगे, अगले हफ्ते हम नहीं करेंगे. It's all right. We'll start sending messages and notes. You are absent, you were absent, you have been absent. और अटेंडेंस भेजना शुरू कर दीजिए कि आपकी टोटल अटेंडेंस इतनी है. आपको लगातार आना होगा तो आप बैठ पाएंगे. Remember, we are friends and facilitators of learning. I am not here to tell you ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे. I've just come here to tell you कि please my boys and girls, आप ऐसा पढ़ लीजिए, ऐसे attend कर लीजिए. You are precious to us. The school is with the children. Without the children, the school is nothing. And this school is so proud that we have about 150 new admissions in the school. कुछ सोच के बच्चे आए हैं, कुछ रिमोट लर्निंग को देख के आए हैं, और अपनी जिंदगी के 1 साल को खराब ना करें. जो आगे बढ़ने का रिवाज है उसको कायम रखिए.
move ahead to the next class and we should go on. जो सपने आप लेके आए हैं वो आपके सपने पूरे हो जाएं, वही हम चाहते हैं. लेकिन मैन प्रपोजेस एंड गॉड हैज हिज ओन वेज. ईश्वर ने कुछ और लिखा होता, हम तो सोचते हैं ऐसा होगा, दिस वुड हैपन, बट इट्स समथिंग डिफरेंट. So here I would like to say, look back and thank God, look forward and trust him. पीछे मुड़िए और देखिए कि कितना कुछ भगवान ने हमारे लिए किया है, कितना कुछ ईश्वर ने हमारे लिए करा है, कितना कुछ वाहिगुरु ने हमारे को दिया है. गॉड हैज बीन सो काइंड टू अस. धन्यवाद करें उसका, और आने वाला समय अच्छा हो उसकी हम प्रार्थना करें. इस स्कूल का कल्चर फर्क है. इस स्कूल में, कमला नेहरू पब्लिक स्कूल में, हम लोग सिर्फ एक ही मकसद से आगे बढ़, वो मकसद है कि बच्चे कामयाब हो जाएं और बहुत अच्छा परफॉर्म करें. उसके लिए सभी स्टाफ एक ऐसा कल्चर है कि बहुत मेहनत करता है. आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय बॉयज़ एंड गर्ल्स. और काहे का टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट ऑफ यूजिंग इंटरनेट. जब आप रिमोट लर्निंग कर रहे हैं तो दैट्स इंपॉर्टेंट, यू हैव टू यूज़ द इंटरनेट. आप यूज़ करिए, लेकिन जो आप सोशलाइज करते हैं उस वक्त जब इंटरनेट का यूज़ करते हैं उस पर ध्यान दीजिए. स्क्रीन टाइम को भी कम करना है तो आप देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं. सो प्लीज़ लुक इनटू इट एंड मेक श्योर दैट वी केटर फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. रिमोट लर्निंग के वक्त बहुत देर अगर बैठना पड़ता है तो 20 मिनट के बाद थोड़ी देर खड़े रहिए, 5, 6, 7, 8 मिनट खड़े रहिए और 2 मिनट चलिए. दीज आर इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल के बाद हम देखें हमारे बच्चे का हंच बैक हो गया है, चुक्के देखने लग गया है, वो कुब्जे निकल आया है, द वे वी से इट इन पंजाबी. So please, my boys and girls, I would like you to be confident, smart, and walk with all the agility and the grace and with lots of confidence, even when these remote learning classes are over. So during this time, everybody has lots of anxiety. Lekin, you know, every challenging time has something good in store. So it has some blessings also. The blessings is that you have chosen the right institution where remote learning classes are going on and you can actually sit for a final examination in a proper manner. We'll be having the pen paper examinations. 3 घंटे का पेपर होगा, 11वीं का फाइनल पेपर. प्री बोर्ड्स के लिए भी बुलाएंगे आपको. We'll be sitting in the verandas. We'll make sure that we keep the distance. फिजिकल डिस्टेंस को फॉलो करेंगे, मास्क भी पूरा पहनेंगे और अपने हैंड्स को भी सैनिटाइज करेंगे. ये सब जिम्मेवारी निभाते हुए आपका रिटन एग्जाम होगा. आप एज्यूम ना करें, प्लीज डू नॉट एज्यूम कि सबको अगली क्लास में भेज देंगे. अगर 40-50 बच्चों को रिपीट भी करना पड़ा तो दे विल हैव टू डिसाइड व्हाट दे हैव टू डू. एंड द नेक्स्ट इज, till now, till this day, 13 years, as we have moved ahead, we just believe in giving the, you know, the certificate how you have performed. Do not assume, do not think that, you know, even if you are not able to clear the 11th standard, you can move out by getting a certificate which says that you've actually cleared. This doesn't happen in our school. 5 महीने पहले आपको बताया जा रहा है कि स्कूल का क्या सिस्टम है. It's a school with a different culture. We are based on truthfulness. हम लोग सच्चाई पे चलते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं. यही कल्चर है, यही आज के नौजवानों को ज़रूरत है. And this is what is required for the country also, for the world also. Truthfulness. And our foundation is laid on truthfulness. Our foundation is laid on the sincerity with which we work for our children. And that's what children imbibe. So please, somebody needs to unmute, somebody needs to mute, please. Yeah, thank you so much, my dear, for muting yourself. So talking about being anxious during this time, it is normal and natural. Every person is anxious because it's quite a period. परेशान सब हैं, बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, parents भी हैं, जिम्मेवारी है, और friends भी हैं और relatives भी हैं. कहीं there's some pain or something sad, किसी को infection हो गया, somewhere something has happened and we have to stand by each other and take care of us. The anxiety which is there, it's natural. But उस anxiety का क्या करें जब कुछ हुआ ही नहीं है और परेशान हो जाए. स्कूल कब खुलेगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा,
उसकी एंजाइटी करेंगे तो वो तो ना आपके हाथ में है बच्चों, ना हमारे हाथ में है। जब सब हालात ठीक हो जाएंगे, स्कूल खोल के, स्कूल तो खुलने के लिए ही है, स्कूल बच्चों के लिए ही है, जरूर खोलेंगे। लेकिन अभी आपने एलओसी के लिए आना है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ग्रेड 11th के लिए आप साइन कर। मुझे पता है इंथुजियास्टिक होंगे कि हमने तो स्कूल भी नहीं देखा, पहली बार देखेंगे। लेकिन जब आप आएंगे, you'll have to wear a mask. If you don't wear your mask, sorry, हम नहीं आपको अंदर आने देंगे। अगर आप लोग 3 लोग बैठ के एक स्कूटर पे आएंगे तो हम आपको नहीं आने देंगे, because it's physical norms with physical distance which needs to be maintained. चाहे पेरेंट्स आएंगे पर बच्चे इकट्ठे बैठ के नहीं आएंगे, एक के साथ नहीं आएंगे। प्लीज टेक इट फॉर ग्रांटेड, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। We'll be making those circles so that you enter from the right manner. We'll be having the children who've already there in grade 10th with us, we'll have their signature on a different day. They've seen the school. But those of you, about 150, will have different, the 3 entries. We'll say somebody to enter from here, somebody to enter from here, somebody to enter from here. Maybe we'll have 3 different gates. Your health is our prime concern. आप ऐसा नहीं होना चाहिए मैं स्कूल गया और उसके बाद मुझे बुखार हो गया। We are worried, we are concerned, we are responsible people, and we don't want that to happen. And another point, you'll have to clear your dues. Be it the dues of the CBSE, the examination fees, etc., the registration fees as we call it, or be it the school dues. Yes, we have been telling again and again, you have to understand, all of us, we need to be paid, and the only source of income is your tuition fees. I'm sorry if we are pestering and we are saying it again and again, but that's the only alternative. वही है हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव, उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। तो ये जो वक्त है, ये डेलिकेट वक्त आपके लिए भी है, सब टीचर्स के लिए भी है, उनके परिवारों के लिए भी है। So thank you very much for all the cooperation to the parents. अभी तक जो आपने हमारा सहयोग किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी। So when I talk about the other points, 75% attendance is already talked about it, and if you don't come on your own, we'll let you be rest at home, and then you'll not be able to sit for your final examination. 100% attendance आप कोशिश करिए कि आपकी हो जाए, पहले जो कम है उसकी भरपूरी कीजिए। और remember my boys and girls की revision classes are very important. The moment the syllabus is over, lots of revision will be carried out. Revision classes में ज़रूर present होइए so that we can perform very very well. The pattern for CBSE is different than the ICSE or Punjab board. 80-20 होता है, कुछ कहीं 30% भी internal assessment है, और उसको आप अच्छे से समझ लीजिए. I'm sure your teachers are telling you time and again. You have to go through the textbooks thoroughly. NCERT की जो किताबें हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िए, because so many times the questions are from there, because that's the trend in grade 12, and that's what we need to follow in grade 11 also. You have to read in between the lines. It means that what is every sentence which is there in a particular chapter, you should be knowing the meaning of it. Don't take these things lightly. I'm seriously telling you. Last minute में कभी कोई जीतता नहीं है. किसी भी तरह की जीत हो, चाहे एक एथलीट की जीत हो, चाहे किसी एक डॉक्टर की जीत हो, उसका नॉलेज स्किल एक दिन में नहीं आता, एथलीट एक दिन में एक्सपर्ट नहीं होता, उसको मेहनत लगातार करनी पड़ती है, तो लास्ट मिनट में कभी कुछ नहीं होता. प्लीज मेक श्योर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, if you have taken all your life very very comfortable and easy, please make sure that from now onwards you start working hard. Some of us are more affected by this pandemic, others are not. Make sure you help your colleagues, make sure you help your friends, help everybody, because that's a sense of satisfaction. Sample papers are there for 10th and 12th. On the basis of that, we find that even for 11th class, it'll be pretty tough and difficult. So don't take your 11th class as an easy class. Normally 11th class and the 9th class are expected to be tough compared to the board classes. So please make sure you work very, very hard. Prepare a schedule for yourself when it comes to revision and the daily
studying as such, so that once your again your syllabus is complete, your revision is thorough. Don't sit idle and quiet in your class. Ask as many questions as you want. जब तक दोनों तरफ से बातचीत नहीं होगी, जब तक engaged classroom नहीं होगी, till that time maybe you are not understanding to the extent we would like you to extend. अपने target set कीजिए कि मेरी मंजिल ये है. I want to get 80%, 90%, 30%. No target 30%, 70%, and so on. Once you set your target, please start working on it. Your target is, I would like to be a CA when I grow up, or I would like to be a scientist, or for me it's being a radio jockey, or for me this is I have to go to hotel management. Wherever you want to go for, उस मंजिल को पहुंचने के लिए निरंतर मेहनत करना वो आज से शुरू हो जानी चाहिए. जो होगा देखा जाएगा. That's not your style and our style. We plan for the future. उस कल के लिए आज तैयार हो जाओ, तैयारी शुरू कर दो. जो बनना चाहते हो जिंदगी में उसको विजुलाइज करो. Imagine that you have reached where you wanted to reach and the amount of comfort you have once you reach that particular point. To have those comforts, you need to continuously work hard. The papers would be such that no rote learning is being encouraged by the CBSE. It says it has to become concept-based learning. हर चीज़ का concept पता होना चाहिए. तो आप अब सिर्फ बाय हार्ट करेंगे तो उससे अगली क्लास में नहीं पहुंच पाएंगे. आपको समझना होगा. जो 12वीं क्लास में है वही तो 11th क्लास में भी आपकी तैयारी उसी तरह से तैयार कराना पड़ेगा आपको. और MCQ पैटर्न है मल्टीपल चॉइस, और मल्टीपल चॉइस तो बहुत ज़्यादा, इफ ओनली योर फंडामेंटल्स आर क्लियर, only then you can go for that multiple choice as such. Apart from all this, you need to sleep well, you need to eat well, because that helps in our preparation. When I talk about sleep well, 6 to 7 hours sleeps, it's the medical sciences say so. And eat well is have some light food. ये जिंदगी है आपकी बच्चे, इसको बना लो सुनहरा. Make it beautiful, make it successful, do what you want. But think about it, that this is the way I would like to live in my life. Tomorrow, you should not be saying, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था कि ऐसे करो. हम बता रहे हैं आपको. Teachers बताते हैं आपको. Parents आपको बताते हैं. So, but self-regulation तो खुद ही सीखना है ना. तो सीखिए बच्चे. अपनी जो दिन की प्लानिंग करते हैं उसमें ये तय करिए कि 5 चीज़ें मैंने करनी है. आप 15 चीज़ें तय कर लेंगे और 15 नहीं कर पाएंगे तो अफसोस में चले जाएंगे. नेक्स्ट डे ऑल्सो यू वॉन्ट वर्क हार्ड. So please make sure that every day you set your targets and then achieve them. Target is, you say, in physics, I'm going to study this particular chapter, say the gravitation, or maybe if you're doing optics or something like that, I'll study this and I'll complete it. All right. And then in English, I'm going to do these 2 lessons. And in chemistry, I'll do this. And in economics, which I'm taking, I'm definitely going to study this theory. Come to web designing, I'm going to revise this particular chapter. All right. For electronics, this is what I'm going to do. For food and nutrition, this is what I'm going to do. अपने plan करिए और रोज के plans को execute करके उसमें successful होइए. You have to do it right away. Don't wait for tomorrow to come. Tomorrow never comes. Another important thing is, it's very, very important to clear both your theory and practicals. एग्जाम्स के बाद ये ना कहें कि प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के तो मैं पास हो रहा हूँ, मैं 11वीं में क्यों डिटेन हो गया. बिकॉज द रूल सेज you have to clear independently in theory examination and independently in practical examination. Coming to the practicals, we don't know when we are going to have the practicals. The CBSE is our mentor. The moment the CBSE says we're going to have the practicals, the children should be going to the labs, we'll be going to the labs, we'll be going to the school. We have to wait and watch for this final directions, and whatever is told to us, we are going to follow that. But passing in theory and practicals is a must. You don't know whether the practical curriculum and the syllabus is evaluated through theory only, being an uncertain time, a difficult time, a different time, an extraordinary time. Extraordinary measures and ways might be adopted for this year's examination. Moving on to some other points, I would like to say that, the anxiety which is caused can always be sorted out with deep breathing.
लंबी लंबी सांस दिन में कम से कम 5-7 मिनट लीजिए. Let more oxygen go to the brain. See, I never knew about this oxygen meter as they call it. ये कोविड ने बताया कि ऑक्सीजन मीटर भी होता है और उससे आपको अपनी बॉडी की ऑक्सीजन नापनी होती है. I knew about clinics that some people in different countries, they would go to an oxygen clinic where they would be inhaling lots of oxygen, just as we have steam bath, oxygen bath type होता है उनका कुछ, और lots of oxygen they inhale and they are fit कि अब मेरे पास पूरे हफ्ते भर की ऑक्सीजन है. पर उनको क्यों जरूरत पड़ती थी? They were in total AC. They never did go out to breathe the air outside. जो नेचुरल ऑक्सीजन भगवान ने दी हुई है उसमें तो वो सांस नहीं लेते थे. उनके घरों में ऑक्सीजन कम थी तो उनको they had to take a dose of oxygen. लेकिन अब हमारे साथ भी तो वही हो रहा है ना. We are staying in a houses, so the oxygen which we need to breathe is less. So please sit near a window and take deep breaths. Go out on the rooftop, on the terrace, and please breathe, take long breath. नहीं ध्यान लगता, आंखें बंद कीजिए और सांस अंदर लीजिए. बलून में हो जा लॉमन, हमारा जो पेट है वो फूल जाए. काउंट कीजिए 1 और छोड़ते हुए सांस को, पेट को अंदर खींचते हुए सांस को फिर नाक से निकालिए. ये आप 10 मिनट रोज करेंगे तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी एंड यू वुड बी प्रीटी गुड एंड योर टेंशंस एंड प्रेशर्स वुड बी लेस. बिलीव मी, आई एम डूइंग इट दीज डेज and I feel very, very happy and energetic every day. Early in the morning I do it. So please do it. It's an experience which I'm sharing. It's not what I have read, I'm sharing. जब आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. आपका अपना मोबाइल इज अ डिस्ट्रैक्शन. प्लीज मेक श्योर व्हेन यू डिसाइड आई एम गोइंग टू सिट फॉर 2 hours and study, put your switch off your mobile and put it aside. अपने टेलीविजन्स को भी बंद करिए और अपने कंप्यूटर्स वगैरह अगर आप नहीं यूज कर रहे हैं तो उनको बंद कर दीजिए इफ यू आर गोइंग थ्रू द हार्ड कॉपी, और इफ यू यूजिंग योर लैपटॉप फॉर लर्निंग, फाइन, इट्स ओके. जैसा भी चाहें. आपके मोबाइल में कोई ऐप्स या गेम है, प्लीज माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, ये 5 महीने के लिए बंद कर दीजिए. फिर जब एग्जाम्स हो जाएंगे प्लीज हैव देम डाउनलोडेड अगेन. आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, बच्चे गलती करते हैं बट लेट्स टू ऑफ अस remind them again and again with all politeness in the world. We are not to fight with our children. We are here to help them to realize that they really, really need to work hard. It's their welfare, and in their welfare and success we are happy people. So please make sure that you look into this particular aspect, and then take care of yourself, take care of your parents, take care of your friends. Together we are in this and together we'll come out of this. Talked about office hours, best use उसका कीजिए. Talked about well-being calls, उसका भी आप इस्तेमाल करिए बहुत अच्छे से. बच्चे तो कहते हैं the best period of the day is the well-being call, where we meet our teachers who are friends and facilitators. उनसे बहुत बात होती है. So please, everybody is here just to help you. That's what we believe in. Another important thing is your optional subjects. Sometimes the word optional makes you feel कि ये subject important नहीं है. If you have 5 subjects, my boys and girls, these 5 subjects each carry 100 marks. And every subject has 100 marks, optional ho ya main subjects ho. So please understand that you need to give due importance and you need to focus on these subjects also in a similar manner, the way you're giving preference and importance to the other subjects. Another point is that this is your 11th class, so we have plenty of opportunities. उन opportunities का ध्यान रखो. Make the best use of opportunities. और जब आप when you listen to so and so in this particular school, they got 98% in grade 12 and so many percentage and this and that, they never got overnight, they worked very, very hard. Burn the midnight oils. आप भी 11th class में बहुत पढ़िए. हमारी कोई लिमिटेशंस नहीं है. वी डोंट हैव एनी लिमिटेशंस. आपको पूरे जहां का टाइम मिला हुआ है, घर में आप 10 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, जितना मर्जी पढ़िए, बिकॉज स्टूडेंट्स आर मेंट टू स्टडी. अपने पेरेंट्स की हेल्प करिए और बहुत सारी पढ़ाई करिए. अपने आप को इतना पुश करिए, कोई आपको पुश नहीं करेगा. आप अपने आप को पुश करिए और पढ़ाई कीजिए. सपने देखिए, उन सपनों को साकार करिए. वर्क हार्ड फॉर ऑल दिस और बी अनस्टॉपेबल.
इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि आप अपना रिकॉर्ड बना दो। जब आप बड़े होंगे, 25-30 साल के होंगे, तो कहेंगे कि जब पैंडेमिक था, एट दैट टाइम आई वाज इन ग्रेड 11 एंड आई वर्कड वेरी हार्ड, आई परफॉर्म्ड वेरी वेल। अच्छी अच्छी मेमोरीज के साथ आने वाले समय को बिताइए। और विद दिस आई थैंक ऑल द पेरेंट्स, सभी माँ बाप, सभी बच्चों के बड़े बहन भाई या माँ बाप या गार्जियन जो भी आज आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप और हम पूरा मिल के एक परिवार बनता है, बच्चे हों, बच्चों के पेरेंट्स हों, बच्चों का परिवार हो, स्कूल हो, टीचर्स हो, हम सब का परिवार, और ये सारे परिवार मिल के एक बड़ा परिवार कमला नेहरू पब्लिक स्कूल बनता है, जिसका एक ही मकसद है कि ये बच्चे बहुत कामयाब हों ज़िंदगी में। ये जब मुड़ के देखें तो कहें एक ऐसे स्कूल से पढ़े थे जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। So with this, I thank the parents, I thank the students for joining in today, and I thank all my beloved teachers. Children, you're very lucky. You'll never find such loving teachers, such hardworking teachers in any school as they are in our school. Thank you very much. I'm open to questions in case you have some questions, please. Hand. Yes, Harleen is there. Yes, would you like to ask some question? Good morning, ma'am. Good morning, dear. Ma'am, I wanted to ask that during this COVID-19 pandemic, when we are staying at home, so how can we keep ourselves mentally strong so that we are able to properly concentrate on our studies? Oh, that's a lovely question. You know, our mind, it listens to us a lot. If we keep saying, मुझसे नहीं होगा, I cannot do it, I cannot do it, the mind start reiterating that. तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे. But if we keep saying, you know, I have to do it, I am going to do it, write some lines and put it right in front of either under the glass on your study table or right on the wall in front of you. Write down these quotations which motivate you. And then the mind will also speak the same language which you are speaking. So reiterate again and again, ki come what may, I'm going to work hard. I'm going to do very well. I'm going to study hard. I want to read this in my life, and this is only by my hard work. So it is reiterating again and again the same thing. Those positive assertions which we give to the brain, are assertions which we're going to live. That's one big way. Think positive and act positive and tell your brain it's going to happen and everything would happen. That's one thing, Harleen. And thank you very much for putting up that question. Thank you. Thank you so much, ma'am. Anybody else? Yeah, in life you get rare opportunities when you're told to, put questions. Please do put questions. Always, not only now, but always. One day you'll be going to some world conference. There also they'll be saying, put up your peace of mind through a question. So if you're not prepared now, how are you going to go into that conference where all scientists would be there? You would be one of those scientists, or economists are there. You would be one of those economists who would be talking. Think over, children. Questions, opportunities should never be missed. Yes, dear students, you have a rare chance today, a very good opportunity to ask questions from worthy principal ma'am. She's actually there virtually talking to you all. As ma'am rightly said, do not, give away this opportunity at all. Speak out your mind, speak out your heart, ask whatever you wish to. She's inviting questions from you, bete. It is a good thing for you all. A very, very good thing. So don't hesitate, please. Speak out if you have a question. So Prabnoor has raised his or her hand. Prabnoor, the student, please speak out. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Ma'am, how can a student have a good relationship with a teacher?
Such a lovely question. Why do we take it as a teacher and a student relationship? You know, relationships are important between a mother and a son, daughter and a father, teacher and a student. Trust. Trust is one. Once we perform what is expected from us. What do the teachers want? They just want you to do well, and that's what is expected for you to do well. Sometimes we as students falter, sometimes we as educators, as teachers also falter. It happens. All right? And if only we can forgive each other for things which I did not like or you did not like, it will be wonderful. So forgiveness is one thing and trust is another thing which let the relationship runs. And the result is we get annoyed, we get upset and we stop speaking. And then after months we realize मैंने बात करनी क्यों बंद कर दी थी. Everybody is not 100% good. कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं. We are not, we try to do. As teachers, we may not be 100% very good. कुछ कमी हो सकती है मुझ में. I might be having something which you may not like, or you might be having something which I may not like. But the sum total is what we have to keep it in mind. If the children can forgive the parents for things which they do not like, and if the parents can forget the children for things they do not like, and if the students can forgive teachers when they go a little beyond their capacities and get involved too much in the personal affairs or something of the students, or we preach a little too much without realizing we are entering into your freedom zone. You know, we are human beings. Teachers do err and students also err. And the best relationship is forgiveness, and the best relationship is trust. So trust your teachers and forgive them if they falter. And for teachers, trust your students and forgive them if they falter. It is mutual. Prabnoor, God bless you. A very difficult question, but just the right question, so that all of us could realize ourselves, what we are, how we, to let this relationship go further. Thank you for this wonderful question. Yes, I find that there's another hand risen up. Ishan Dugal, ma'am, has raised his digital hand. Okay. Ishan, please speak and ask your question. Good morning, ma'am. Good morning, dear. How are you, ma'am? God's grace, my son. Fine, ready for all of you always. Fit and fine. Ma'am, I want to ask the question that in today time, there is so much COVID-19. So some people are not able to recognize the importance of social distancing. So as a young youth, how can we help them recognize the importance of social distancing? Such a relevant question, Ishan. Thank you so much. You know, sometimes what happens, the peer pressure becomes a real challenge. What happens, my friends would say, tu aise kar raha hai, you know, why don't you try this out? When we fall into wrong company, you know, anything for that reason. ये तो बच्चा है, ये नहीं कर रहा है, हम तो बड़े हो गए हैं, we don't have any worries and all those things. I believe the same thing is going for social distancing or the physical distancing. कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता. But you know, this is science. And it's WHO, the source which is most trusted. It also says that, you know, the physical distance need to be maintained. So I hope and pray that good wisdom prevails. As a student, as a responsible student, I should keep on saying, nahi physical distance matter karta hai, and I still live the way I want to live. अगर मैं physical distance में विश्वास करता हूँ तो मुझे ध्यान रखना है. हमने shake hands नहीं करने, हमने distance maintain करना है, हमने face mask पहनना है, हमने hands को sanitize करना है. When you come to the school, you'll have to carry your own sanitizer for that reason. हम सब ने ये norms follow करने हैं, तभी हम COVID से एजाद पाएंगे. If we don't follow these norms, even today, if I look at it, there are people who are leaving this earth, वो हार जाते हैं COVID-19 से.
हम ऐसा मौका क्यों दें कोविड को कि हम हार जाएं, हमें दुनिया छोड़नी पड़े। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एज ओल्ड सेइंग है, बहुत जमाने से, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। So you carry out your this thing. We can be active on social media. We can have slogans where we say it, where you keep talking even in spite of the fact that the children keep saying this to you. They say आपके immunity strong है, बच्चों की नहीं होता, पर कुछ बच्चों की immunity strong भी नहीं होती। बच्चों को भी हो रहा है कोविड, अब बच्चे नहीं बचे हैं। So please लेट्स टेक द प्रिकॉशंस। मुझे नहीं होगा, उसको हो गया, उसको हो गया, उसको हो गया, पर मुझे नहीं होगा, that's a wrong belief. COVID never, the virus never see who's rich, who's poor. The virus never see who's old and who's young. The virus affects everybody. इफेक्ट किसी पे उसका ज्यादा होता है अगर उसकी बॉडी स्ट्रांग होती है, किसी पे कम होता है। और बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। वी हैव लॉस्ट लाइव्स इन लैक्स in our country. क्यों वेट करें उसके लिए हम, right? So precaution is better than prevention is better than cure. Keep on talking, keep on blowing your own trumpet. नहीं, precaution लेना है। Yes, I have Shweta now. Yes, Shweta. Good morning, ma'am. Good morning, dear. Ma'am, I want to ask that sometimes we are attending the class, but we actually don't able to concentrate in the class. As we know that we are sitting just at home, nobody is seeing us. So we just sometimes we just lose our concentration. So I want to ask, how can we increase our concentration power? बेटा एक तो वो लॉन्ग ब्रीदिंग, दैट्स वन थिंग, एंड सेकंड इज ध्यान तो जाएगा इधर उधर, उसको वापस लेके आओ। यू नो व्हेन दे से जब मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाते हैं तो उसमें दे कीप सेइंग इट, ध्यान तो भटकेगा, वो तो एक चुलबुले हिरन की तरह होता है। दैट्स व्हाट दे से, माइंड इज लाइक दैट, इट कीप्स रनिंग अराउंड लेफ्ट एंड राइट। ब्रिंग इट बैक, बार बार वापस लेके आओ कि नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ना है। You have to talk to your brain. You have to go for self assertions. Assertions positive directions होते हैं ब्रेन के लिए कि मैंने ये करना है, मेरा ध्यान नहीं जाना चाहिए, चलो मेरा चला गया, मैं वापस लेके आ रही हूँ। यू आर राइट। आप कोई यू नो ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स, कितनी डिस्ट्रैक्शंस है आपकी जिंदगी में कि कोई आपका क्लासमेट भी कुछ कह देता है तो यू डिस्ट्रैक्टेड, नहीं लगता ध्यान। ये सब नेचुरल है, बट उससे हाउ टू विन दोज थिंग्स इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। So tell yourself again and again, I need to go back. Why don't you write down certain lines where you sit and study? Even if my mind goes left and right, I will come back. And your question is normal. It's a right question. It happens. You know, the same thing happens in the class also. When a teacher would say in the physical class, "Kahan soch rahe ho? What am I teaching? Answer this question." पता चला आपका तो ध्यान ही नहीं था. Your mind was wandering outside. तो mind का काम तो wandering ही करना है. We have to bring it back. We have to bring it back again and again and again till it starts focusing. It happens in the physical class, it happens in the online class. दोनों जगह हो जाता है, पर उसको वापस लाना है. That's it. Okay, Shweta? Thank you. Thank you, ma'am. God bless. So I believe there are no more questions. कोई पेरेंट्स कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? हम तो टीम है, पेरेंट्स और स्कूल, और टीम का मकसद ये जीतना, to win over our children and make sure that they work hard. So my beloved students, thank you very much for joining, and please join every day. We might go for an experiment where we won't give a single call. नुकसान हो जाएगा बच्चों आपका, आप ना करें ऐसा। ओके, टेक केयर। ऑलराइट, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। उपासना, ओवर टू यू प्लीज। Thank you so much, ma'am, for those wonderful words, for those inspiring words, for those clear words and the clear sharing of so many facts. Thank you very much. It is so nice to hear it from you, and I'm sure the chat window, as always, is buzzing with a lot of thank yous, smileys, some folded hands to thank you, ma'am. And as I recall and as I can make out, there are some newcomers who have joined. They're not newcomers now, I'm sorry,
But yes, the 11th class who have joined us virtually this year, they are also thanking you. And yes, ma'am, I'm very sure they are the students who are from other schools who have joined us in grade 11. I'm sure they are deeply touched by your presence, by your words, by your advice to all of them, your suggestions. I'm sure it shall be the wonderful Wednesday would be a turning point for some of them, for all of them rather, and they're going to learn that yes, how studies and academics are paramount in their life. It's a grade 11, it's not a small class, it's not an unimportant class. So that's very nice, ma'am. And thank you so much, ma'am. I'm sure everyone goes back enriched and students are happy again. The chat window is still buzzing, ma'am, with lots and lots of thank yous coming your way. And thank you very much, ma'am. Thank you for your time. You have spared your precious time. You have come to us. You have virtually met students. You've virtually met we colleagues. You've virtually met respected parents. Thank you very much, ma'am. And once again, we thank you from the bottom of our heart. We thank our respected parents who have been there. We thank our dear students, but I'm sure grade 11 goes back enriched and serious now, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you and have a great day, all of you. God bless you all. Thank you. God be with you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Students, now you can leave the call beta, but then you need to join the second period link. Remember, according to the timetable, that's Wednesday's timetable, आपका जो भी period है बेटा, whatever period it is, the second period, please go and join that link. Thank you very much. Do not be late for that class. I'm sure the teachers of your second period, the second period subject teachers are waiting bete for all of you. Thank you so much. You can leave the call, you can leave this link bete, and please join your respective links. Science students going to the science class, commerce to their link as such, to their respective link, vocational and humanities also joining in their respective links. Remember, it's the second period of Wednesday's timetable. Thank you very much. Students, please leave the call and join your respective classes. All of you. Kiran ma'am, if you are around, you can be here. May I join my 11th vocational class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Hurry up, dear students. Please leave the call. Join your second class, please. Go for your second period. Hurry up, please leave this link. Hurry up.